Hello student, exercise 3.6. We will do example 17 to 19 in this video. Method reducible, chapter 3rd, pair of linear equations in two variable. Example 17 is on your screen. Solve the pair of equation. Here x and y in denominator. That's why we will reduce it. We can write it as, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सी 1/x सेम, 1/y सेम. रिड्यूस करने का मतलब 1/x को आप a पुट करेंगे और 1/b को 1/y को b पुट करेंगे. इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? 2a 3b 13, 5a - 4b इक्वल्स टू -2. रिड्यूस हो गया. जो x और y डिनोमिनेटर था वो कहाँ चला गया? न्यूमरेटर में. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 multiply equation 2/3. For multiplication, use rough work area. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12b, 13 4 जा 52. Right here. इक्वेशन सेकंड को 3 से करना है आपने. 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 of minus. Both are same term, opposite in sign, cancel. Plus plus plus, plus minus minus, sign which is greater. Here 52 is greater than 6. In front of 52, sign is of plus. A is 2. A2, then we will find B. Put A in equation 2. 5a - 4b - 2. a के जगह आपने क्या पुट करना है? 2. 10 - 4b - 2. -4b लेफ्ट हैंड साइड, 10 जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा. -4b - 12, b is 3. Now 1/x, a is 2, interchange, x is 1/2, b 1/y, that is 3, interchange, then y is equals to 1/3. Answer. Example number 18. सेम x - 1, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. पुट 1/x - 1 a, 1/y - 2 b, 5a plus 1b equals to 2, 6a - 3b equals to 1. Multiply equation 1/3 to make variable b same.
cut opposite in sign. A is 1 by 3. A is 1 by 3. Now put this A in equation 1 और 2. आप 1 में पुट करें, आप 2 में पुट करें, both are same things, आंसर सेम आएगा. Put A in first. Five by 3 plus B equals to 2. Then B is equals to, एलसीएम लिया आपने, 1 by 3. In demand we have to find x and y. 1 by x minus 1 is A. A is 1 by 3. बैलेंस x माइनस 1 जो है वो 3 के इक्वल आ गया क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास इक्वल है. वैल्यू ऑफ x इज 4. 1 बाय y माइनस 2. b 1 बाय 3 आपके पास. देन y 3 plus 2 makes 5. Hence x 4 y 5 is your answer. Next is example number 15 of the exercise 3.6, most important example, or we can say most important example. A boat goes downstream 30 kilometer upstream, 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream, 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. Downstream and upstream we already discussed in exercise 3.6, sum number 2, part first, but I will repeat it. Boat x kilometer per hour its speed, water, current or stream speed is y kilometer per hour in the same direction, means to say downstream speed is x plus y. पानी जो है स्पोर्ट करेगा. अपस्ट्रीम रोइंग वाटर x y. पानी जो है रेजिस्ट करेगा, दैट इज अपस्ट्रीम स्पीड x minus y. Now we will do question. Speed of stream, speed of boat. Let me take speed of boat first. Speed of boat in still water x kilometer per hour. Speed of stream y kilometer per hour. Downstream speed boat speed plus water speed. Upstream speed boat speed minus water speed. According to question, a boat goes 30 kilometer upstream. Distance is speed multiply time, then time is distance
by speed. Here distance 30, 30 by x minus y, 44 downstream, 44 by x plus y, together in 13 hours. Constant time, variable time. Equation 1. Next, 40 kilometer upstream, 40 by speed, 55 downstream, 55 by x plus y equals to 13. Equation 1, 10 hours. Here 13. Equation number second. Put 1 by x minus y. We can write it as लिख सकते हैं हम ऐसे 1 बाय एक्स माइनस वाई को आपने ए पुट करना है और 1 बाय एक्स प्लस वाई को आपने बी पुट करना है. इक्वेशन बिकम्स 30a 44b equals to 10, 40a 55b equals to 13. 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई makes 120. 10 4 जा 40, 3 से मल्टीप्लाई किया 40 को 120, 165b, 13 3 जा 39, कैंसिल, 11b equals to 1. b is 1 by 11. b is 1 by 11. Then we will solve for a. b को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. 11 1 जा 11 4 जा 4 राइट हैंड साइड में आ जाएगा. a is 6 by 30 makes 1 by 5. But we need here x and y. b 1 by 11, a 1 by 5. a 1 by 5. a is x minus y. Then x minus y is equals to 5. b 1 by 11 equals to 1 by x plus y. Then x plus y equals to 11. Now solve these two. x is 8. आपने x को पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में. y is 3. Hence speed of boat in still water 8 kilometer per hour. Speed of boat, speed of water or stream, you can say 3 kilometer per hour. Thank you. Have a nice day. Okay, student.